Hello students, welcome to my channel. Our topic of discussion is top taxonomic categories of living organisms. लिविंग वर्ल्ड में, इस पूरे लिविंग सिस्टम में आप किसी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको कहाँ पे पुट करोगे, किस कैटेगरी में रखना है. तो लिविंग सिस्टम में हम लोग टैक्सॉन बनाते हैं. टैक्सॉन मतलब होता है लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन, राइट. हर एक लेवल को क्या बोलते हैं? टैक्सॉन. सारे टैक्सॉन है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास और जो भी जा रहा है होता है वो सब टैक्सॉन कहा जाता है. और फाइनली सबसे ऊपर से पहुंच जाते हैं, बोलते हैं क्या? किंगडम्स. तो सारे के सारे एनिमल्स कहाँ कहे जाते हैं? एनिमल किंगडम में है. फिर बाकी हम जब करेक्टर वाइज बात करते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? नीचे तक, स्पीशीज तक पहुंच जाते हैं. मतलब बहुत ही प्रिसाइज और कंक्लूड कर लेते हैं कि नहीं, हम स्पीशीज, ये पर्टिकुलर स्पीशीज कही जाएगी. अब डिस्कशन है कि कैसे और आइडेंटिफाई किया जाए. प्लांट्स के लिए हमने बताया, डिवीजन के लिए डिवीजन इस्तेमाल करते हैं फाइलम की जगह पे. Our planet is filled with numerous living organisms. To simplify the study of these organisms, they are classified into convenient categories based on their characteristics. This classification process is known as taxonomy. Taxonomic studies require careful identification of the organisms, for which intensive laboratory and field studies are carried out, and actual specimens of plant and animal species are collected. These studies help in disciplines such as agriculture, forestry, industry, and in knowing the biodiversity. Over the years, biologists have developed many methods and techniques that help in taxonomic studies. These are also known as taxonomical aids. Herbariums, botanical gardens, museums, zoological parks, and quays are some examples of taxonomical aids. Let's learn a little more about these aids. Note the points. A herbarium is a storehouse where a collection of dried plant specimens are mounted on sheets, labeled, and systematically arranged based on the universally accepted system of classification for use in scientific study. हर्बेरियम में कोई भी प्लांट स्पीशीज़ है उसको ड्राई करके एक पेपर में चिपका देते हैं. उसके बाद उसका डेट कहाँ पे फाइंड आउट किया गया, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम, सब कुछ, सारी चीज़ें साइंटिफिक डेटा में रख दिया जाता है, ताकि कभी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो पर्टिकुलर शीट निकाल के हम उसके बारे में जान सकते हैं. Details like the date and place of collection, the English, local and botanical names, the family of the specimens and the collector's name are also recorded. These herbarium specimens are often used as reference material in taxonomic studies. Another place that provides taxonomical aid is a botanical garden. A wide variety of plants are cultivated in these gardens for scientific research. जैसे लखनऊ में NBRI नाम का बोटेनिकल गार्डन है. क्या बोलते हैं इसे? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे रिसर्च भी होती है, टिश्यू कल्चर पे वर्क होता है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वर्क होता है, और साथ साथ यहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन भी किया जाता है, राइट. Conservation, display, and education. Each plant is labeled with its botanical or scientific name and family. Some of the famous botanical gardens are at Kew in England, the Indian Botanical Garden in Howrah, and the National Botanical Research Institute in Lucknow. Biological museums, set up in educational institutions, also act as taxonomical aids. These museums have collections of preserved plants and animals, which are used for study and reference.
They are preserved in jars using preservative solutions or as dry specimens. Insects are collected, killed, pinned, and then preserved in insect boxes. Larger animals are typically stuffed and preserved, or their skeletons are displayed. Zoological parks or zoos also help in taxonomical studies. These places house wild animals in protected environments similar to their natural habitats under human supervision. An animal's food habits and behavior can be studied here. A biological key is another taxonomical aid used for the identification of plants and animals. For the point. It is a list of questions that help identify and classify a living organism. Each question presents contrasting characters of an organism in a pair called a couplet. इस स्लाइड में जितने पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं. Does the animal have a soft body? Right? Maybe a fish. और does the animal have a hard body or a shell? तो या तो वो फिश होगा या तो इन सब कैटेगरी में आएगा. अगर शेल है, हार्ड बॉडी है, तो क्या क्वेश्चन बनता है? अगर शेल है तो क्या क्वेश्चन बनेगा? डज द एनिमल हैव नो लेग्स? तो मोलस्क में हो जाएगा. डज द एनिमल हैव लेग्स? और अगर लेग्स भी है तो डज द एनिमल लिव इन मोस्टली इन वाटर और आउट ऑफ वाटर? अगर इन वाटर है तो वो क्रस्टेशियन कह दिया जाएगा, और अगर आउट ऑफ वाटर है तो इंसेक्ट माना जाता था. तो ये शुरुआत का की बनाई गई है कि जनरल आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाना चाहिए. राइट? तो एक पर्टिकुलर की है, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करते हैं. To classify the organism, the character similar to the organism has to be chosen. So in a couplet, one character is accepted and the other is rejected. Answering the questions in this analytical manner helps in identifying the organism. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species, for the purposes of identification. This is the correct identification system from lower taxo to higher taxo. I am going. यहाँ पे देखेंगे ल्यूपस स्पीशीज है, कैनिस जीनस हुआ, फैमिली कैनेडी में आया, कार्निवोरा ऑर्डर आया क्योंकि कार्निवोरा में लायन और बाकी सब आ गए थे. मैमेलियम में भी तो सारे आ जाते हैं, क्योंकि मैमेलियम बात करें तो बहुत कुछ आ गया. तो जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना ब्रॉड होता जा रहा है, जितना हम नीचे आ रहे हैं उतना हमारे लिए कंसाइज यानी प्रिसाइज होता जा रहा है. हम पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करेंगे तो बहुत नीचे आ जाएंगे, यानी एकदम एक्यूरेट हमें कैरेक्टर्स मिल जाएंगे तो हम स्पीशीज़ की बात करेंगे. जब हमें जनरल आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो एनिमल है, किस टाइप का एनिमल है, तो हम यहाँ रहेंगे, किंगडम में रहेंगे, फाइलम में रहेंगे, सब फाइलम में रहेंगे, क्लास में रहेंगे. राइट? तो हम जितना भी हायर लेवल या लोअर लेवल जाएंगे तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के टेक्निक मिल जाती हैं. हम ऑर्गेनिज्म को देख के बता सकते हैं वो किस कैटेगरी में रखना चाहिए, अगर आपके पास एक जनरल टैक्सोनॉमिक टूल है तो. Other taxonomical aids like Flora, manuals, and monographs are also used. A flora is a document that contains information about the plants of a particular country, region, or time. Manuals provide information that helps in the identification of the names of plant and animal species found in a specific area. A monograph is a written account or description of a single taxon. It provides detailed information about a particular species and how it fits in with the overall taxonomy and classification. In today's scenario, when many plant and animal species are endangered, taxonomical aids play a crucial role in studying the important facets of living organisms and saving important information about them for future reference. The world consists of